challenges versus achievement. So there are so many challenges in your life, but there are so many opportunities to achieve or to meet out, to mitigate the risk or the challenges as well. What are these challenges are? I would request one click, please. So there is no challenge. Is there any child sitting before me? Or all of the budding managers are sitting before me? Any child who can raise hand? There's no child. So you have already enjoyed your childhood. You are no more a child. You don't have that privilege to commit mistakes. Okay? So the next one. So you are a student or an intern. So this is the present status of most of you. So this is the time. No, please don't click next. They are not aspirant now. They are a student or intern. So this is the time when you have to choose whether you have to opt HR, you have to opt finance, you have to opt consulting, you have to go in manufacturing industries, you want to go in some automobile industries, some civil aviation industries, some agro-based industries, some service industries, some wellness or beauty related company you are going to join as a manager. What you are going to be in your upcoming career. So don't think that way like any of the companies will provide you a very good package, then you are going to join that company. Don't think that way. And that way, if you think that way, then you would not be able to perform your interview, during the interview. Whoever will be able to perform good in his or her interview will the student who will, already, identified the sector in which he wants to pursue his career. So whenever you decide as a student that I will pursue my career in this career as a manager, as a HR, or as a whatever position you are thinking about, so just prepare your planning. There should be two goals. One is short-term goals, another is long-term goals. Wherever you want to see yourself after 3 years, this is the short-term goal. As a manager, as a general manager, whatever, during the 3 years. So your short-term goal should be there in your mind, should be there on your study table, should be there sticked on the wall of your study room. So this is my short-term goal. After 3 years, I will be there as a manager in this company, in this sector. As a student, you will have to finalize your future right now. Or as an aspirant, if you will not finalize this, next please, then you will have to enter in the area of this aspirant. And after completing your PG, if you are going to search a job, that is a very difficult and struggling period, The next, please. Don't try to enter as an aspirant. Don't try to enter even a struggler. And more time, if you will spend, 1 year or two as an aspirant, then you will have to start your struggle. So better to think now as a student or as an intern than what you are going to be. The next, please. And this is the worst one. This is the worst one. If this goes continue like the long time as an aspirant or long time as a struggler, in that case, you will have to opt in compromised career. ये सबसे बुरी, सबसे खतरनाक बात होगी. और अदरवाइज अगर ये नीचे वाले एरिया में नहीं आते हैं, सिर्फ ऊपर ही ऊपर रहते हैं, तो नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन. सो ये सारे आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट्स होंगे. तो अभी आपको ऊपर वाला ही जो लेयर है वहीं से सीधे स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स की तरह से ही अपने लाइफ टाइम अचीवमेंट वाले एरिया में आपको एंटर कर जाना है. अगर नीचे आ गए, अगर एज ए स्टूडेंट आपने नहीं सोचा कि आपको कहाँ जाना है, कुछ भी कंफ्यूजन रही, हाफ हटनेस रही, तो फिर इधर नीचे आना होगा. और नीचे वाले एरिया से ऊपर जाना असंभव नहीं, लेकिन कठिन बहुत होता है. इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, वहीं रहिए. एंड दिस अप्लाइज टू मी एज वेल. कौन कितना एम्बिशियस है, कौन कितना महत्वाकांक्षी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. दिस अप्लाइज टू एवरीबडी, इवन ऑन योर फैकल्टीज एंड द स्टूडेंट्स एंड द HR और द जो मैनेजर्स, जो भी कॉर्पोरेट से, जो भी हमको यहाँ रिप्रेजेंटेटिव सारे के सारे हैं. मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ बड़े चैलेंज के साथ में, ये सब के ऊपर अप्लाई होता है. ऊपर चले गए तो ऊपर जाते जाओगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स आप अचीव कर पाओगे. नेक्स्ट प्लीज. सो हियर इज द रोड मैप. Please click one by one. So this is the first phase of your, the first milestone of your career. You'll have to make a decision. Make a decision, like you have to define your role as a student while you are a student.
You have to define your role in your mind, like what is your interest? What is the field of your interest? So this is what you have to finalize here, right now. The next one. And this is the planning of WH. Planning of WH like why, what, when, where, and how. These are the 5 key questions which you have to ask yourself, like what I have to become, how I can become this, for that what, how includes so many like answers. उसके लिए ये जानना होगा, ये समझना होगा, वो पढ़ना होगा, वो सीखना होगा, उस तरह का प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, इस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर मेरा प्रोजेक्ट होना चाहिए, इस फील्ड में मुझको इंटर्नशिप करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जाके मुझे लर्निंग्स करना है, समर कैंप में वहाँ पे जाऊँगा. आप अपने इंटरेस्ट को आप अपने फैकल्टीज़ को बताइए, अपने मेंटर्स को बताइए. एंड मेंटर्स को भी यही करना है स्टूडेंट्स के साथ में, कि उनका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको समझना होगा यहाँ पे. एंड ये WH को आपको फाइनल करना होगा. देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी व्हाइल यू आर फाइनलाइजिंग योर WH. डजंट मैटर यू आर ए स्टूडेंट और यू आर ए फैकल्टी और you are working on a very top position in a corporate. So continuously we also work on these WHs. If I have to, if I expect a career growth, in that case, I have to, continue work on these WHs, day by day, WHs. When I'm standing here and introducing you, this is also a part of these WHs. My organization, जो KVIC है, Khadi and Village Industries Commission, they expect to, disseminate the knowledge and awareness related to Khadi. What do you think by Khadi? A fabric which is, usually worn by some politicians. No. That is a thought. That is a thought. Somebody must have, heard about the monumental national flag, the biggest national flag ever. लेह की पहाड़ी पे अभी कुछ 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले खादी ने, हमारे खादी ग्रामोद्योग आयोग ने बना के वो दिया था. Can you think? We are providing, jobs or like employment to millions of people. वो भी चैरिटी करने के लिए क्यों खादी पहनेंगे, ये सोच सकते हैं आप. तो अब मैं आपको बताता हूं. खादी इज द मोस्ट इको फ्रेंडली फैब्रिक ऑफ द वर्ल्ड. कैन यू थिंक? अभी पहनेंगे, अभी ज्यादा पैसे भी देंगे, इसके लिए पहनेंगे. सो द कॉज, वो वजह आपके पास हो सकती है कि आप चैरिटी के लिए खादी पहनेंगे, या आप सबसे अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं उसके लिए पहनेंगे, दुनिया का सबसे इको फ्रेंडली कपड़ा पहनना चाहता है उसके लिए पहनेंगे, या मिलियंस ऑफ लोगों को खादी में रोजगार मिलता है उसके लिए पहनेंगे. हो सकता है ये सब भी चीजें आपकी काम की बातें ना हो. बट लेट मी शेयर ए डेटा विद यू. कैन यू इमेजिन इवन दिस COVID period, last financial year's turnover related to these khadi products within India only, 95,000 crores of rupees worth khadi was sold during the financial year 2020-21, even during the COVID. So this is a very emerging sector. बड़े बड़े corporates इसके ऊपर काम कर रहे हैं and globally इसका बहुत डिमांड है. तो जब आप सोचते हो कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, जब आप सोचते हो हैंडलूम इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, जब अपैरल मेकिंग या अपैरल इंडस्ट्री में आप जाने की बात सोचते हो, तो देन यू विल हैव टू थिंक अबाउट दिस. दिस इज द इमर्जिंग सेक्टर. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. आई एम नॉट अर्जिंग यू टू इस फील्ड में आप जाके काम करें. सो नेक्स्ट प्लीज. एंड दिस इज द फेज 3. In phase 3, you will have to implement all the WH. It's okay. You plan your things very smartly, very cleverly or very smartly, very appropriately. If you are not able to implement your plannings, then the planning doesn't work. So whatever you plan, whatever your WH, whatever your timelines for your WH, you will have to meet out all the timelines of your WH while you are implementing all those plannings. So this is a very necessary, point. The third phase is very necessary. We plan in a very big way, but we are not able to implement that. If we are able to implement that, we are not able to meet out the, timelines. So this is very crucial and necessary, especially for budding managers. You will have to complete your studies well in time. You will have to complete your products well in time. You will have to complete whatever assignment is expected by your course curriculum. Out of that, what else you can, gain as a knowledge, as an experience?
What else you can participate within the institutional activities? Out of the institution, you can represent your institution in some of similar kind of, HR conclaves or some of similar kind of, fairs or, exhibitions or some other programs. So that is what makes you a manager have a, difference. So the last one, and this is the very, important, the most important. Like if you have a thought in your mind that after 3 years you will be manager in some multinational company on this sector, then after becoming the manager, the work is not in. Actually, the task is started after achieving that short-term goal. The real work starts after achieving the short-term goal. That is the big challenge. And that is the big challenge which, makes you enable to switch over company to company, post to post, designation to designation, lower package to higher package, and higher package to more than that. And companies, invite you on the ability, on the basis of your abilities, on the basis of your performances, on the basis of ideas you have, on the basis of performance you have already demonstrated. So this is the thing. And that is why from Sadhu Vaswani College to, Center for Entrepreneurship Development to EDI Ahmedabad to, Ministry of MSME, Government of India. In the age of 47 years, I got, the A-grade position, gazetted A-grade position in the ministry in the age of 47 years. And I am the fortunate enough who got this position in the age of 40 years. Like there was a direct recruitment based on the experience, based on the the performance you have demonstrated in your previous life. So performance always works. And second important thing related to performance, either you are faculties, either you are students or strugglers, whatever you are, the proper documentation of your performance. Somebody, they don't, even remember their own achievements. If I ask कि कबड्डी में आपने फर्स्ट प्राइज जीता था तो कौन सा साल जीता था, किसको हराया था, तो वो सर्टिफिकेट देखेगा, और सर्टिफिकेट देखेगा तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उसको. देन वो ये नहीं होना चाहिए. Always try to get more and more medals, more and more certificates, more and more activities. Be very proactive. The first ever quality of a manager is always be proactive. Otherwise, there is salad competition, salad making competition. So what? This task is not related to boys. No, this is related to boys only. If you are going to, join a hospitality industry, in that way you would be able to understand, you can contribute something, some uniqueness to your chefs or like the जो kitchen की आपकी team होगी उसको कि ये ऐसे करिए. But that proactiveness, जो हमको shyness को जो निकालना है, तो वो manager के बीच में से हमको निकालना है. Next slide, please. So the challenges, a few of challenges. These are not, nobody can list the challenges of, being faced by the industry, all the sectors. Nobody can list out that. There are so many challenges. The list is endless. But a few challenges you can understand better. First is, either the product in which the company is dealing, in which the corporate is dealing, is still not in the existence. Like you are working in some company and some allied activities that has a very good demand, but company is not able to, provide such kind of products or services. And you are able to, provide some ideas, some solutions, to introduce some new product, some new services, which has a very good demand in the public. That will make you unique. That will make you a star, if you have some ideas. So, where there is a problem, there is a solution as well. Who is providing this? AC है. अभी AC है तो अभी को understand the solution. Solution is the business idea. Always. ये कभी भी देखिएगा, correlate करिएगा आप. And second challenge is, you can see the product or services are already in the market but fail to satisfy the customers, their need, like what in terms of size, in terms of colors, in terms of packaging, in terms of delivery, in terms of prices, in terms of all after sale services, in terms of the utility, in terms of the packet size, in terms of delivery, whatever it is. So you can provide a solution related to so that that can increase the
satisfaction, customer level satisfaction for that particular industry. This is the permanent problem being faced by the industry. जब से ये जो इंडस्ट्री कारपोरेट या जो कुछ भी ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुई है, तब से ये दोनों समस्याएं हैं कि ये तो अवेलेबल ही नहीं है, इसका क्या इंडस्ट्री लगाएं, क्या चलाएं, इसको इस सेक्टर में क्या जाएं, ये तो अवेलेबल ही नहीं है, इसका रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट प्लीज. एंड दिस इज द कॉमन चैलेंज नंबर 2. Either the product is always available excessively. कहते टमाटर 50 पैसे किलो बिक रहा है, रोड पे फेंकना पड़ रहा है, आलू का ये हाल है. Why don't you process that? Why don't you preserve that? Why don't you add some value in that? Because you don't have any idea to add any value. You don't have any idea, you will be fired from the company. If you have idea for solutions, you will be awarded, you will be rewarded. So always there are the problem. Excessiveness is not the problem. Problem is that we don't have idea to to use optimum level that particular excessiveness. Somewhere in some geography, in some other country or some other states, there would be deficiency of that particular product. So why don't you make some good products out of that? Why don't you pack them? Why don't you export them to that particular geography and get a very good profit for your company? So that is a challenge, but that is a opportunity as well. So there is a deficiency of the specific product, service, whatever it is. If deficiency is there, again you have to make a small survey. Sometimes desktop survey. अभी तो कंप्यूटर पे ही ऑनलाइन गूगल गुरु सब कुछ बता देता है. ये चीज यहाँ पे नहीं मिलती तो कहाँ पे मिलती है. So just import that particular products or like the service providers, they are in that locality where this service or products are not available, and make profits, make money out of that idea. Next please. The common challenge number 3 for the all the sectors, forward and backward linkages. This forward and backward linkages is a very common thing, but like available of technology, machinery, manpower, workforce, skilled workforce, raw material, ancillary units, supporting units, good marketing team, good marketing channels, value chains, supply chain, whatever it is. ये सारी की सारी जितने भी hard intervention, soft intervention or like जो thematic intervention है related to any of the industry, that is directly related to these forward and backward linkages. So there must be some lacuna. Let me put an example. Can anybody tell me, like the budding managers are there, can anybody tell me कि अभी किया कुछ साल पहले ही किया जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, they launched their cars in India. उसमें 6 महीने या 1 साल का वेटिंग क्यों चल रहा है बहुत सारे मॉडल्स पे? क्यों चल रहा है? क्या वो बेचना नहीं चाहते? क्यों लोग पैसा बुक करके और पैसा अपना कैरी करके रखते हैं 15 लाख रुपए, जिस दिन मुझे मेरी कार की डिलीवरी मिलेगी उस दिन ये 15 लाख दूंगा और तुरंत ले लूंगा? क्या कंपनी कार बेचना नहीं चाहती इंडिया में? किया का मैंने एग्जांपल दिया. एनीबडी कैन टेल मी? प्रोडक्शन कम है. क्यों प्रोडक्शन कम है? चाइना से कुछ आता था, कुछ बेंगलोर से आता होगा, कुछ मैं कोलूखेड़ी, ये गांव था वहां रहता हूं, कुछ कोलूखेड़ी के पास कोई होगा वहां से आता होगा. ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं. आप समझिए, किया सब कुछ नहीं बनाता है, या ऑडी सब कुछ नहीं बनाता है, मारुति सब कुछ नहीं बनाती है, मर्सिडीज सब कुछ नहीं बनाती है. उसका जो स्टूडियो है वो स्टीरियो कोई और बनाता है, टायर्स कोई और बनाता है, रेडिएटर कोई और बनाता है, उसके प्लास्टिक कंपोनेंट्स कोई और बनाता है, ग्लास से रिलेटेड चीजें टफन वो बनाता है, कोई और बनाता है. So, like we need to understand there are so many ancillary units, they need to enhance their productivity, their production as per the standard of that particular, production unit, and they have to meet out at that, that need. The level of जो उसको जितना चाहिए प्रोडक्शन, वो नहीं मीट आउट कर पाएंगे तो किया वाला कार नहीं बना पाएगा. किया वाला कार नहीं बना पाएगा तो नहीं बेच पाएगा. नहीं बेच पाएगा तो a certain percentage, like say 10%, 25%, 20%, they are very eager to get a new car. Even that's okay, Kia has a very good car. वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है कि अगर अभी मिल जाएगी तो किया लेंगे, लेकिन they can't wait more. They are going for some other brands.
and Kia is losing business. Why Kia is losing business? Because they are not able to meet out the supply. Why they are not able to meet out the supply? Because they're dependent on so many ancillary units. They are manufacturing small components for Kia, and they are not able to provide those standard components to Kia. That's why Kia is not able to enhance the productivity. So whose fault is this? This is the fault of managers. Those they are managing these ancillary units, or those they are not able to even create some more ancillary units working in Kia. Kia is a worldwide famous company. I'm just putting an example for Kia. There are so many car companies, automobile companies, there are so many products. अभी जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय बजाज का स्कूटर लेने के लिए आपको नंबर लगाना पड़ता था. जो लैंडलाइन टेलीफोन होता था उसके लिए नंबर लगाना पड़ता था और वेट करना पड़ता था. अभी वेट करना किसी को पसंद नहीं है. 1.5 लाख का भी मोबाइल फ़ोन लेना होता है किसी को, आईफोन. तो अभी सुबह अगर पापा तैयार हो गए तो पापा अभी चलिए, आप तो आप शेव भी मत कीजिए और आप नहाइए भी मत, अभी कपड़े पहनिए, चलिए उसके बाद में देखेंगे क्या करना है. इतना भी वेट नहीं किसी को है. तो इस ज़माने में, इस तेज़ी के ज़माने में आपको ये जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं इनको स्ट्रेंथन करना होगा. दैट इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स. दैट इज आल्सो ए वेरी बिग चैलेंज ऑल अक्रॉस द सेक्टर्स. नेक्स्ट प्लीज. आप देखिए ये सब चैलेंजेस क्यों बता रहा हूं. आप कितने चैलेंजेस मीट आउट कर सकते हो, उतना जल्दी, उतने ज्यादा, उतना अच्छा ऑफर आपको मिलने वाला है. So the key challenge, अभी देखिए कॉमन चैलेंज की बात करें तो the key challenge for our faculties as well, faculties of BSS, IAS, faculties of every management institution. This is the key challenges. Not only for faculties, even the challenge for the budding manager, for the students as well. What is the key challenges? If we ask anybody, if we ask even in this forum, I'm not going to ask, looking to limitation of the time. But if we ask such kind of questions, you can easily imagine what sort of answers I got. Next slide, please. Next slide for answers. So this is what companies or corporates or the employers, they want to see in you, see in their manager. These are the, top 50 words. So choose how many of these words do you have. ईमानदारी के साथ, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में अंतर नहीं होना चाहिए. हर कोई कहता है मैं ईमानदार हूं. पता पड़ा अभी टेस्ट करेंगे तो वो उसकी ईमानदारी साबित हो जाती है कितनी है. So pick the word which you have in you. So these are the challenges being faced by all across the sectors. This type of manpower, this type of workforce, they are not able to get. They are not able to get this type of workforce. These are the challenges. And we as an education institution, we have to meet out these type of challenges. We as a budding manager, we have to meet out these challenges by creating, by generating these qualities in ourselves. If you are able to create or generate factually all these qualities in you, then you would be able to pursue your career. You will be able to have instant growth in your career, continuously growth in your career. Next, please. And some other forces are also, they drive, such kind of challenges. Sometimes these are the, known as a privileges. Sometimes these are known as a challenges. What are these? These are economic forces. Sometimes a big company introduce their products, like Jio आ गया, Jio ने free में मोबाइल दे दिया, ट्रायल के नाम पे 1 साल दे दिया, सबकी छुट्टी कर दिया. So this is the perfect example of economic forces. Social forces like बहुत सारा, like लोगों में चैरिटी के लिए इंक्लिनेशन है, लोगों में like विदेशी चीज़ों के लिए नहीं है. अभी रिसेंटली चाइना के जितने भी प्रोडक्ट्स थे, अगर उसका मालूम पड़ जाए कि चाइना का प्रोडक्ट है, तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल रिलेटेड टू सोशल फोर्सेस. कि अभी हम कोई चाइनीज प्रोडक्ट या चाइना का जो कोई उसमें कंपोनेंट भी लगा हुआ है, नाम भी लगा हुआ है, तो उसको हम लेना नहीं चाहेंगे. रिसेंटली टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने सुना होगा. मैं यहाँ से चलूँ और सोचूं बहुत गर्मी लग रही है, घर जाऊँगा तो गर्म मिलेगा, मैं यहीं से अपना एसी ऑन कर सकता हूँ. इवन आई कैन सेट टेम्परेचर ऑफ माई रूम. मैं यहीं से कमांड दे दूं और मुझे मेरा सैंडविच जो मैं रख के आया था माइक्रोवेव ओवन में, कि जब मैं आऊँगा तो उसको कंज्यूम करूँगा तो वो उसको गर्म कर दे. मैं यहीं से कमांड दे दूं तो मेरे लिए कुछ और दूसरी चीज़ें तैयार हो जाएं, मेरे बाथरूम का गीज़र ऑन हो जाए. अभी आप देखेंगे
my daughter, I'm sharing the experience of my daughter. मैं भी आईफोन यूज करता हूँ, she also uses आईफोन. तो वो आईफोन वहां रखा होता है, हे सीरी कॉल पापा ऑन स्पीकर. शी इज नॉट रेडी टू उठ के इतना तकलीफ भी क्यों करने का है कि फोन लगाने का है. वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. आप सीरी यूज करते हो सर्च के लिए, वेदर के लिए, वेबसाइट सर्च करने के लिए, कॉल लगाने के लिए, उंगलियां ना दुखें तो टेक्स्ट करने के लिए, वो पूरा डिक्टेशन ले लेता है, सब चीजें ले लेता है. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. तो दीज आर द टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स जो कि अभी सेक्टर्स को ड्राइव कर रहे हैं. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें, अभी यहाँ कोई एफपीओ की बात कर रहा था, तो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस में भी टेक्नोलॉजिकल ये सारी चीजें आ गई हैं. कुछ नहीं तो उसमें बार कोड होगा, क्यूआर कोड होगा, उसकी पूरी बेसिकल इंफॉर्मेशन को समझने के लिए. और वहाँ सब जगह इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स लगते हैं. आप लोग लगते हो, हर जगह आप लोग लगते हो. ये मत समझिए कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एविएशन में या आईटी में या उस सब चीज़ में है. नहीं, ऐसा नहीं है. सो पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी चेंजेस, पॉलिसीज चेंज होती हैं. अभी किसान वाला जो चल रहा था कितने दिन से, तो उससे किसान सारों का ध्यान उधर लग गया था. पॉलिटिकल जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो प्रायोरिटीज़ के हिसाब से डेवलपमेंट होती है. सेक्टर्स जो है उनका डेवलपमेंट, या तो उनके लिए अच्छी पॉलिसीज़ आती हैं या ऐसी पॉलिसीज़ आती हैं जिनसे उनके ऊपर कंट्रोल होता है. ये सारी चीज़ों की समझ आपको रखना होगी. नेक्स्ट प्लीज. आई एम जस्ट गोइंग टू कंक्लूड. A few examples of some common challenges being faced by a few factors, like some resources, availability of resources, excessively available, not available, both are the challenges. Gender based, the workforce, gender is a very big issue at workplaces, so this you need to understand better. Need based, needs are changed. बड़ा एक प्लांट लगाया और फिर उसके बाद में उस प्रोडक्ट का डिमांड ही मार्केट में से चला गया एकदम से, तो क्या करेंगे. तो you will have to, as a manager, you will have to be ready, you will have to make ready your corporate, your industry, your company for diversification. You will have to estimate the possible changes which are being introduced within a year or 2 years or 3 years or 5 years. If you want to become global level manager, in that case you will have to explore the opportunities to understand whether your industry would be profitable one after 1 year, 2 years, 3 years. Estimated balance sheets are not only the work which is being undertaken by the financial department or account department, but there are also some important inputs being provided by the manufacturing department, by the works department, by the inventory people, raw material supplier, vendors, ancillary units. You need to collect information from all these stakeholders which are providing the strength to make to be your industry as a profitable one. So wants based, demand based, supply based, technology driven, skill driven, recipe driven, and so on. There are so many factors which drives different sectors. So the next, sustainable development goals. कीर्ति मिश्रा जी जब बता रहे थे तो मैं सुन रहा था, मैं फिर बता भी रहा था अरविंद प्रकाश साहब से कि ये मैंने एक स्लाइड रखी है उसमें से. फॉर एग्जांपल PwC एक कंसल्टिंग बड़ा बिग 4 जो फर्म है ऑल ओवर वर्ल्ड, उनमें से एक माना जाता है. अरविंद प्रकाश साहब हमारे साथ में उसमें से एक PwC में टीम लीड हैं एडवाइजरी. सो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर आप कंसल्टेंसी में, कंसल्टिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में, वेरी गुड एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आर देयर. आप सिर्फ अकेला अगर SDG देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखेंगे, देयर आर 17 टाइप ऑफ इश्यूज विच आर बीइंग एड्रेस्ड. UN ने जो बताया है सोशल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, ये 17 है. livelihood is there, poverty is there, hunger is there, safe drinking water is there, forest conservation is there, environment conservation is there, and so on. So many things are there. अभी ये सब चीजें तो आप नहीं सीख पाओगे, इन सब के तो एक्सपर्ट आप नहीं बन पाओगे. बट एज ए वर्डिंग मैनेजर यू नीड टू अंडरस्टैंड द सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एवरी सेक्टर, एवरी द फील्ड in which you are seeing your career, you are focusing your career. Next please. This is just an example. Next please. Need not to discuss this one. So finally, what do you want to be? What do you want to be? If you are seeking a job, being a job seeker, so this is not fair enough from your point of view. If you are thinking like I am a job seeker, I just need a job everywhere in any sector, then this is not fair with yourself, with this institution, even with your parents. You have a very clear understanding that you are seeking a job in this sector
दैट WH जो मैंने पहले बात कही थी वो पूरा उस सबके साथ में होना चाहिए, देन ठीक है। और जॉब क्रिएटर, यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, you want to become your own boss, you want to provide jobs, you want to create jobs, you don't want to follow others orders, but you want to get followed your orders by someone else. In that case you can opt these the entrepreneurship. In that case you will have to understand government policies for enterprise creation. Ministry of MSME की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ सब मिल जाएगा आपको। इसमें भी वो मदद करती है कि यहाँ से जाके आप इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे तो आपका जाने का किराया हवाई जहाज का वो देंगे, वहाँ रुकने की आपकी सारा इंतज़ाम वो कर देंगे, वहाँ पे आपको अच्छी जगह पे प्राइम लोकेशन पे स्टॉल एग्जीबिशन के लिए मिल जाए, उसका किराया भी आपको ना देना पड़ा, वो भी आपको दे देंगे। आप कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो किस कंट्री में आकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किस कंट्री में, सारे डेटा में सब गवर्नमेंट मदद करेगी आपकी, ये आपको पता होना चाहिए। उसमें सब्सिडीज़ हैं, उसमें क्रेडिट्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ इतने कम समय में नहीं बताया जा सकता। बट दीज आर द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द इवन एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स। दे आर रिक्रूटिंग मैनेजर्स एवरी ईयर्स, बट द मैनेजर्स दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट इन दैट वे व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। वो उनको पता नहीं होता है पॉलिसीज़ क्या है। तो ये सब चीज़ें आपने जब भी सोचा WS फाइनल किया, उस फील्ड का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको, प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज, वो सारा का सारा आपको गेन करना है। सोशल एंटरप्रेन्योर चैरिटी वाला है, लाइक दिस इंस्टीट्यूशन। दिस इंस्टीट्यूशन इज बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड फॉर सोशल काज टू मेक youth educated so that they can get good job, good career, or they could be self-employed. A very minimal margin for that, like out of that they are getting so that they can survive for their operational expenses or recurring costs, etc. So this is the approach, like some hospital charging very minimally, like सेवा सदन इन बेरागढ़ में आप देखेंगे तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बहुत मिनिमल चार्ज करते हैं, लेकिन वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज देते हैं आपको। सो यू कैन बिकम ए सोशल एंटरप्रेन्योर एज वेल, अगर उस तरफ आपका कुछ रुझान है तो। और इंट्राप्रेन्योर, this is the best for if you are seeking a career as a job employed person, then this is the best one. If you become an intrapreneur, then rapid growth is already ensured. Like wherever you got a job, you will work that like this company is my company and the loss of this company is my loss and the profit of this company is my profit, and you work that way. In that case you known as a intrapreneur. This is a new term in this field, in the field of management. So next please. So this is what I wanted to share here while we are discussing about the challenges all in the sectors all across. And in half an hour allotted to me, I hope I justified the subject, but I may not be. So some other times if I get opportunity to interact with you, in that particular occasion I would be able to discuss something else, something more, something in an elaborative way. So if there are some queries, some questions from the faculties, from the budding managers, then I would like to welcome such queries or like questions or like some feedback from your side. Anybody else, please. I would like to welcome queries related to my session. Thank you so much. So any queries? Okay. So thank you so much to the management of this BSS IAS for providing opportunity to address you. Thank you for that.